Hello students, this video is for grade 1st. Let us start. In this sheet, we are having 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects, which are English, Maths and EVS. So let us start with our first subject, English. Write a paragraph on my favorite season. ओके आपका जो फेवरेट सीज़न होगा उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ राइट करना है. ओके फेवरेट सीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल व्हाट्स योर फेवरेट सीज़न. समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न और स्प्रिंग सीज़न या फिर ऑटम सीज़न. कौन सा सीज़न आपका फेवरेट है? पहले तो आपको ये बताना है. माई फेवरेट सीज़न इज़ विंटर और समर. लाइक we can consider summer. Okay, let's consider summer. My favorite season is summer. Summer season is very enjoyable season for kids. Why? Because the school gets off in summer. Okay, क्या होता है, गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, इसीलिए बच्चों को समर सीज़न बहुत पसंद आता है. एंड ऑल्सो दे गेट टू ईट सो मेनी स्वीट मैंगोज. उन्हें बहुत मीठे मीठे आम खाने को मिलते हैं, विच इज़ अ सीजनल फ्रूट. मैंगो क्या है? मैंगो इज़ अ सीजनल फ्रूट एंड वी गेट टू ईट मैंगो इन समर्स ओनली. और हमें गर्मियों में ही सिर्फ आम खाने को मिलते हैं. एंड ऑल्सो वी गॉट वाटरमेलन. हमें वाटरमेलन भी मिलता है. अंडरस्टूड? सो लाइक दिस what you will write? You will write about your favorite season. Like what do you like to eat? Like ice cream, cold drinks, and even we wear cotton clothes so that the cotton can pass air so that we will not feel sweat. Okay, और कॉटन के थ्रू एयर जब पास होगी तो उससे क्या होगा, हमें स्वेटिंग नहीं होगी, पसीना नहीं होगा. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे यू विल राइट अबाउट योर फेवरेट सीजन एंड ऑल्सो इन विच मंथ इट फॉल्स. कौन से महीने में आता है. लाइक द समर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मिड ऑफ मार्च एंड लास्ट टिल द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. ओके क्या होता है, मिड मार्च से शुरू होता है, 15 मार्च या 20 मार्च से ऐसा कुछ करके शुरू होता है आपका समर सीज़न. और कब तक चलता है? जुलाई तक. ओके जुलाई के फर्स्ट वीक तक. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे यू विल राइट अबाउट योर फेवरेट सीजन. लाइक आई हैव टोल्ड अबाउट समर, यू विल राइट एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया है. बस चेंजेस क्या करेंगे कि आप मतलब सीज़न का नेम चेंज कर देंगे. उस समय में कौन से फ्रूट्स मिलते हैं ये राइट करेंगे. उस समय में कैसे कपड़े पहनते हैं ये राइट करेंगे. वो सीज़न आपको क्यों पसंद है ये राइट करेंगे. अंडरस्टूड? कौन से मंथ में आता है वो राइट करेंगे. ओके सो इन दैट वे यू विल राइट अबाउट योर फेवरेट सीजन. नाउ let's move to our next section of the sheet, which is maths. The question says write in standard form. Okay, standard form में write करना है. 90 plus 0, standard form will be 90 only. 90 plus 0 equals to 90. 30 plus 6, 30 plus 6, 36. 10 plus 2, 12. 30 plus 1, 31. 20 plus 5, 25. 20 plus 7, 27. 30 plus 8, 38. 50 plus 0, 50. 40 plus 6, 46.
Understood? So this is called as your standard form. Understood? इसी तरीके से क्या करना है, ऐड करते हुए लिखते जाना है. इन बोथ द क्वेश्चंस ऑफ दिस मैथ यू विल डू द सेम. दोनों ही क्वेश्चंस में आपको सेम करना है. Now let's move to our last section of this sheet, which is of EVS. Write true or false. क्या राइट करना है, सही या फिर गलत. ट्रू मतलब सही, फॉल्स मीन्स रॉन्ग. विंटर सीजन इज वेरी हॉट. विंटर सीजन क्या होता है, बहुत गर्म होता है. इज इट ट्रू? नो, विंटर सीजन इज वेरी कोल्ड. विंटर सीजन बहुत ठंडा होता है ना, बहुत ठंडी लगती है ना. So winter season is not very hot. This is false statement. This is wrong statement. What we will do? We will write false. F A L S E. False. See the next statement. On a cold day, we eat ice cream. ऑन अ कोल्ड डे मतलब एक ठंडे दिन पर. ओके मतलब जिस दिन का जो टेम्परेचर हो वो बहुत कम हो, मतलब ठंडा हो दिन, तो उस दिन हम आइसक्रीम खाते हैं. इज इट ट्रू? ठंडे दिन हम आइसक्रीम खाते हैं? नो, ऑन अ हॉट डे. ओके, ऑन अ हॉट डे वी ईट आइसक्रीम. अगर दिन गर्म होता है तब हम आइसक्रीम खाते हैं. अगर हम सर्दियों में आइसक्रीम खाएंगे तो क्या होगा, सर्दी हो जाएगी. So that is why this statement is also false. F A L S E. False. Next statement is on a rainy day we need umbrella. एक बारिश के दिन पे मीन्स ऐसा दिन जिस दिन बारिश हो रही हो. ओके, उस दिन हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है. ऑन अ रेनी डे वी नीड अम्ब्रेला. इज इट ट्रू? जब बारिश होती है तो क्या हमें अम्ब्रेला का नीड होता है? यस, वी नीड अम्ब्रेला. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट ट्रू. T R U E. True. Understood? So on this basis what you will write true or false for the statements. Okay, हर statement के लिए आपको बताना है कि ये statement सही है या गलत है. सही है तो आप रखेंगे true और wrong होगा तो you will write false. I hope you all have understood this sheet very well, but if you have still any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.